is going to be a great event, and definitely some real men from India are going to be awarded, and which I'm sure they definitely truly deserve that. So I am looking for a lot of fun, and I think it is a really great course which they thought about. According to you, who is the real man? What is the definition of yours for real man? Someone who has a good heart and helping others. I think that's the true heroes all over India, which we can find in many, many documentaries. We have also been seeing that. So I think the true guy, the true hero, the true man of India should be someone who is helping others without expecting anything else for that. Any real man come in your life? I'm still waiting for that. So, Claudia, what's going on in Bollywood? In Bollywood, my upcoming movie is Kya Kula Hum Part 3, which is releasing beginning of next year. So that's what I have been working for now, and yeah. So, how was it working with the gang of boys, Aftab and Tushar? Yeah, Aftab, Tushar and Krishna is there, so they are really fantastic actors, great comedians. So we had plenty of fun. Every scene was turning out to be something different only. Of course, in a positive manner. It was fantastic. The comedy timing they have, and especially Krishna also joining the group. Of course, Tushar and Aftab are profis already, and Krishna joining them. We had really some great masti, and I'm sure you guys will be enjoying Kya Kula Hum in a real enjoying, really. Thank you. All the best. Thank you. मैं से भाग के आया हूँ, तो मैं बड़ी 2 घंटे बाद गाड़ी से उतरा हूँ, तो मुझे बस अच्छा लग रहा है, बहुत एनर्जी है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट इवेंट. मैं बहुत ही खुश हूँ कि जिप्पो और मैक्सिम ने मुझे चुना है फॉर दिस रियल मैन कैंपेन. और या रियल मैन भाग के आता है. आपके लिए रियल मैन की डेफिनेशन क्या है रियल मैन बहुत सारी चीज़ें हैं. रियल मैन वो है जो बम्बई की सड़कों पे चल भी सकता है, वड़ा पाव खा सकता है, और आपकी 5 स्टार होटल में इतनी शानदार पार्टी में भी एंटर कर सकता है एट द सेम टाइम, एंड स्टिल विद अ स्माइल बिकॉज ही एक्सेप्ट्स एवरीथिंग दैट कम्स हिज वे, टेक्स इट एज अ चैलेंज एंड डज इट. नहीं, मैं शूट कर रहा हूँ उसमें, तो मेरे पटाखे वहीं फूटेंगे सेट पे. हैप्पी भाग जाएगी शूट का सेकंड शेड्यूल शुरू हो रहा है. सो या आई थिंक चंडीगढ़ में होगी दिवाली. अच्छा, न्यू ईयर के लिए कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. न्यू ईयर नहीं, पूरे साल रेजोल्यूशन होना चाहिए. न्यू ईयर पे उसकी असेसमेंट होनी चाहिए. अच्छा, नया साल आ रहा है तो चीज़ें भी नहीं होंगी, तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? नहीं, एक पूजा भट्ट का जो प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह शुरू होगा जनवरी में, बिकॉज दिसंबर आई थिंक विल फिनिश हैप्पी, एंड उसके बाद या लव अफेयर विच इज़ बीन इन द न्यूज़ ऑलरेडी, वो because it's been delaying. How do you define the real man? Oh, I said something. Oh yeah, you'll have to play that back and check it out. But I think this is such a great event, and not just real men, and I think real women as well. A real man is someone who, I believe who has immense respect for humanity, and I think that's not a Miss Universe or Mr. Universe answer. It's just it's what it is. You have to be comfortable in your own skin. You can do that. नहीं, मेरी एक फिल्म प्ले हो रही है मामी पे, बल्कि 2 अब हो रही हैं, क्योंकि यशराज की हम लोगों ने एक वेब फिल्म भी की है, दैट्स ऑल्सो प्लेइंग एट मामी. सो उसका काफ़ी अच्छा फीडबैक आया है विद द ट्रेलर एंड एवरीथिंग. सो आई एम एक्साइटेड. या बट अभी नथिंग, नॉट अ स्टूडियो फिल्म राइट नाउ. फास्ट एंड फ्यूरियस वाज द वन आई डिड. अभी मेरा यहाँ काम चल रहा है, आई कांट निग्लेक्ट दैट. चलिए, सुपर. थैंक यू सो मच.